So in the previous class, we had completed till question number 11. Question number 11, we had written down the equations. We had not solved them, but we had written the equations very well. So I hope all of you have solved it. If not, you have left some space. Solve that. Now the question number 12 to question number 18. Question number 12 to 18 are about two-digit numbers. They are based on two-digit numbers. Okay. Listen carefully. Two-digit numbers. You need to write down some statements now. Okay. To all of you know what a two-digit number is. For example, I write a number 23. So you know that this is a two-digit number. Okay. There is no confusion there. In a two-digit number, this number here is called as the units place digit, and this number is called as the tens place digit. Okay, all of you know this also. Units place digit and tens place digit. Now what does this units place and tens place mean? इसका मतलब क्या है? Units place mean, do you know what is place value? What is place value? बहुत पहले बचपन में पढ़ा होगा. Place value, can anyone tell me? Sir, tens, hundreds. Means tens, hundreds. Means मुझे बताओ इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है? करेक्ट, यानी करेक्ट, यस. Sir, which number? 3. मैंने 3 को मार्क किया ना यहाँ पे. उसकी प्लेस वैल्यू क्या है मुझे बताओ. Sir, in chat or orally? बोलो ना. 1. 1. No, sir. Sir. Sir, it will be in ones or. ठीक है, मैं बताता हूँ. सी, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है? ये जो नंबर है 3, ठीक है, इट इज इन द यूनिट्स प्लेस. यूनिट्स प्लेस का मतलब होता है कि दैट नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 1. तो उसकी प्लेस वैल्यू हुई 3. जैसे अगर मैं पूछूं कि इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है, तो दिस नंबर इज एट द टेंथ प्लेस, मींस दैट नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 10. तो उसकी प्लेस वैल्यू हुई 20. ओके, तो एक टू डिजिट नंबर बनता कैसे है? एक टू डिजिट नंबर कैसे बनता है? जो टेंथ प्लेस का डिजिट है, ठीक है, दैट मल्टीप्लाइज विथ 10, प्लस जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है दैट मल्टीप्लाइज विथ 1. When you add both of them, 20 plus 3, you get 23. This is how a two-digit number is made. Get it? So this was just a basic understanding to you. Now what we do, if we have to find a two-digit number, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? That we always take the tens digit as x and the units digit as y. टेंस डिजिट को x लेते हैं और यूनिट्स डिजिट को y लेते हैं. ठीक है, जैसे हम जो अगर 23 नंबर है, ठीक है, तो ये जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो होगा x और जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है वो होगा y. डिजिट को x और y लेते हैं. ठीक है, अब अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो दिस टेंस प्लेस डिजिट विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 10.
and the units place digit will get multiplied with 1. ठीक है, तो into 1 नहीं भी लिखे तो भी चलता है. तो इस 23 की वैल्यू क्या होगी? 10x plus y. करेक्ट ना? जिस समझो कि x की जगह पे मैं 2 पुट करूंगा, y की जगह पे 3 पुट करूंगा, तो आई विल गेट दिस. आर यू गेटिंग हाउ डिड आई राइट दिस? मैंने ये 10x plus y कैसे लिखा है समझ में आया? जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, और जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है वो 1 से होता है. सो दिस इज हाउ यू राइट अ 2 डिजिट नंबर. एक 2 डिजिट नंबर कैसे होता है? 10x plus y. ठीक है. Now, if I say that the digits, if I say that the digits are reversed, क्या कहा मैंने? The digits are reversed. Digits are reversed मतलब 23 क्या बन जाएगा? 32 बन जाएगा. करेक्ट. 23 will become 32. So इसका मतलब अब 3 आपका 10th डिजिट बन गया और 2 आपका यूनिट्स डिजिट बन गया. ओके. तो मैंने पहले 2 को x लिया था और 3 को y लिया था. ठीक है. तो अब ये जो x था वो इधर आ गया और जो y है वो इधर आ गया. ठीक है. Now if I ask you that what is the number, then the number will be 10y plus x. करेक्ट. रिवर्स होने के बाद नंबर ऐसे हो जाएगा क्योंकि टेंस प्लेस और यूनिट्स प्लेस डिजिट्स इंटरचेंज हो गए हैं. ओके. सी वी विल बी यूजिंग दीज डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला. ठीक है. बट फिर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, इसलिए आई गेव दिस फॉर्मूलास. सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है कि एक्स वाई क्या होता है, यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस डिजिट क्या है. ठीक है. तो नाउ आई गिव यू सम स्टेटमेंट्स, सम रूल्स. Copy them down, and before doing 2 digit sums you will need to revise them. Okay. So first thing, if in the question they say a 2 digit number, अगर उन्होंने बोला है a 2 digit number, ठीक है, या कभी कभी कहते हैं ओरिजिनल नंबर, तो वो होता है 10x plus y. Okay, I'm giving these statements to you which will make the sum easy for you. Okay. Second, if they say reverse number, or digits are interchanged, दोनों का मतलब सेम होता है. digits are interchanged. अगर ऐसा किया तो the number will become 10y plus x. Okay. Yes, you have to copy this down. ठीक है. Then they may give you like this, sum of the digits. ऐसा भी पूछ सकते हैं, sum of the digits. सम ऑफ द डिजिट. देखो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 23 का, इसमें ये था आपका 10th डिजिट और ये था आपका यूनिट्स डिजिट. ठीक है. तो अगर मैं सम ऑफ द डिजिट्स, जैसे मैं अगर आपको पूछूं कि मुझे बताओ 23 का सम ऑफ द डिजिट्स क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स फॉर 23? सम ऑफ द डिजिट्स इज 5. यस, वेरी वेल, वेरी गुड. आई कैन सी आंसर्स कमिंग. सम ऑफ द डिजिट्स क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स इज 2 plus 3 किया आप. ठीक है. व्हाट डिड यू डू? यू डिड 2 plus 3. तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या होता है? x plus y. ओके. देन just leave 2-3 lines here. If there is anything else, I'll add it later. फिलहाल ये तीनों से हमारा काम हो जाएगा. Okay, then we will just start with the sums from the exercise. Okay, copy this fast.
Okay, so let's start with the question number 12. We have to form the equations. The sum of the digits of a two-digit number is 5. So क्या दिया है? Sum of the digits. See, before every sum, you have to write a statement that let the tenth digit be x and units digit be y. You have to write this. You have to make this statement. Okay. Then I'll read the question. The sum of the digits of a two-digit number is 5. So sum of the digits क्या है? Sum of the digits 5 है. तो sum of the digits होता क्या है? X plus y, that is given as 5. ये बन गया मेरा first equation. X plus y is 5. Okay. Now the second equation. Second statement क्या दिया? If the digits are reversed, so original number क्या होता है? Original number is 10x plus y. और reverse number क्या होता है? Reverse number is 10y plus x. ठीक है? What they are saying is if the digits are reversed, ठीक है, digits reverse हो गई, मतलब अभी ये हमारा नया नंबर है, ठीक है, इसके बारे में क्या बताया है? The number is reduced by 27. The number is reduced by 27. मतलब digits के reverse करने पे, what is the question trying to say? That digits को reverse करने पे नंबर 27 से कम हो जाता है, नंबर की वैल्यू कम हो जाती है. ठीक है, जैसे कुछ भी हो सकता है. देखो फॉर एग्जांपल 32 एक नंबर है, ठीक है, आपने इसके डिजिट्स को रिवर्स किया तो ये 23 बन गया, तो मतलब इसकी वैल्यू कम हुई ना. यू कैन सी द वैल्यू कम हुई. कितने से कम हुई? आई गेस 9 से कम हुई है वैल्यू. ओके, तो इसी तरह से जो केस हमारा इस क्वेश्चन में है, दे आर सेइंग दैट व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 27. ओके, सो ये है रिवर्स नंबर. ओके, तो नंबर 27 रिड्यूस हुआ. किससे रिड्यूस हुआ? ओरिजिनल नंबर से. तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर था उससे 27 कम हो गया. ओके, जैसे देखो, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, तो जो आपका रिवर्स नंबर है, रिवर्स करने के बाद ये नंबर आया ना, ठीक है, ये क्या हुआ? जो ओरिजिनल नंबर था उसमें से 9 कम हो गया, तब जाके ये इसकी ये वैल्यू आई है. ओके, सो दिस इज योर रिवर्स नंबर, दिस इज योर ओरिजिनल नंबर एंड दिस इज द रिडक्शन. इसी चीज को यहाँ पे हमने वेरिएबल के फॉर्म पे लिखा है. द रिवर्स नंबर इज व्हाट? ओरिजिनल नंबर माइनस 27. ओके, यस, ये सेम क्वेश्चन नंबर इंक्रीज में भी आ सकता था, ठीक है, बट ऐसा केस यहाँ पे नहीं है. इंक्रीज में भी आ सकता है, डिक्रीज में भी आ सकता था. यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है द नंबर इज रिड्यूस्ड. ओके, सो नाउ दिस विल गिव मी माय सेकंड इक्वेशन. सो इसको मैं सॉल्व करता हूँ. 10y plus x minus 10x minus y equals minus 27. I have shifted these variables on the left hand side. So x minus 10x will give me minus 9x. 10y minus y will give me plus 9y equals minus 27. Okay, you can take here common, you can take minus 9 common, so you will get x minus y equals minus 27. So x minus y equals minus 27 upon minus 9, that is 3. So what is your second equation? Second equation is x minus y equals 3. Now I won't solve it, you will solve it for me. Solve these two equations and tell me the value of x and y first. All of you have solved it. I'll pick anyone and I'll ask.
I can see few students giving wrong answer. I'll just read out. Yani correct. Manya, just check your answer once again. Manya or Manya? Manya. Just check once again. Kef, not correct. Do it once again. Darsh, correct. Sioni, Saisha, correct. Kef, Pari, correct. Rajveer also correct. Yash also correct. Yes. So there is a hand raise. Yes. Nivan, any doubt? No, Yashi, check your answer again. Swayam, correct. Sia, correct. Fast, students, fast. Ahana, correct. Yes, Nivan, correct. Manya, now correct. So, what you should get is, when you add it, you will get 2x equals 8. So, x equals 4. You will get x as 4. Okay. And you will get y as 1. You will get x as 4. And after substituting the value of x, you will get y as 1. X as 4, y as 1. After getting this answer, you have to write the statement in the end. What statement? That therefore, the two-digit number is x क्या था 4 और y क्या है 1. So number is 41. Understood? The number is 41. Any doubts, anyone? See देखो 41 हमारा नंबर था, उसको अगर रिवर्स करोगे तो बन जाएगा 14. तो कितने से कम हो गया ये नंबर? दिस नंबर रिड्यूस्ड बाय 27. दिस वाज द क्वेश्चन इन शॉर्ट. Okay. I hope all of you are comfortable with this sum. So let us start the next one. Question number 13. The question reads, sum of the digits of a two-digit number is 7. Sum of the digits is 7. ठीक है? So sum of the digits क्या होता है? Sum of the digits means x plus y is 7. ठीक है? So ये बन गया मेरा first equation. Sum of the digits is 7. If the digits are reversed, so if the digits are reversed, so the reversed number क्या होता है? 10y plus x. ठीक है? And what is the original number? 10x plus 5. So if the digits are reversed, the new number decreased by 2 equals twice the original number. क्या कहा है statement? See, जो first statement मैंने लिखा था in the previous sum, that let the tens digit be x and the units digit be y, that has to be written in all the sums. Okay, so consider that statement to be written in all the sums. So as soon as you start the sum, you have to write the tens digit is x, units digit is y. Okay. So what they are saying is, the new number, I'm writing it here so that I can explain you word by word. The new number decreased by 2 equals twice the original number. ठीक है, ये है स्टेटमेंट. तो हम इसको अभी यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लाते हैं. ठीक है. सो द न्यू नंबर, दिस इज माय न्यू नंबर, जो रिवर्स करके नंबर मिला ये मेरा न्यू नंबर है. ठीक है. डिक्रीज्ड बाय 2, न्यू नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 2 equals twice the original number. Original number means 10x plus y. Understood? See the new number, this is the new number, decreased by 2 means minus 2 किया,
ठीक है, equals, so this is the equal to sign here, twice the original number. So twice the original number. Understood how I got the equation? Word by word हमने समझा है इसको. Okay, now let's simplify this. Are you getting this equation? Minus 19x plus 8y equals to, this will be your second equation and this is my first equation. Solve the equation simultaneously. Equate the variable y, equate the coefficients of the variable y. Do it on your own. I've got two answers from KF and Yani. Come on, others. Correct, Dash. Very good. Lines are same, so you will need to subtract. When you subtract, the sign changes. Correct, Eunice, Aisha. Both answers are correct. You will get x as 2. और x2 मिलने के बाद substitute. Put in equation 1. No, Gia, just check your answer once again. Put equation in 1 और फिर आपको y मिलेगा. Put in equation 1. Solve this. And then you will get y. Okay, so all of you have got the answer. X as 2 and y as 5. So I hope you have written the statement. Therefore, the two-digit number is 25. Okay, the two-digit number is 25. Let's go to the next question.
Question number 14. Tenth digit is x, unit digit is y. The tenth digit of a two-digit number is 3 times the units digit. The tenth digit is 3 times the units digit. Simple equation. ये जो tenth digit मतलब x, ठीक है, is 3 times the units digit. Okay, so this will become your first equation. Shift 3y here. This is my first equation. Then they are saying sum of the number and the unit digit is 32. Second statement ने क्या बोला? Sum of the number and the unit digit is 32. ये है statement. Sum of the number and the unit digit is 32. So how should I write this? Number and unit digit. Number मतलब original number समझो. Okay, can anyone tell me how do I write this? How do I make an equation from this? Yes, Jan. So 10x plus y Correct. Plus- For original number 10x plus y. Correct. plus y Plus units digit is y. Very good. Is equals to 32. 32. Yes, very good. So I hope all of you understood. हाँ, correct करी. So original number है 10x plus y and units digit is y. So आपका equation क्या बन जाएगा? 10x plus 2y equals 32. Now you can take a 2 common here. So you will have 5x plus y equals 32. So 5x plus y equals 16. This will be your second equation. Okay, now equate the coefficient. I think it will be easy to equate the y coefficient. Okay, so this is 3 and here it is 1y. So इसको 1 से करो और इसको 3 से. Solve it fast. This y and this y became 2y. Yeah, very good, very good. I'm happy to see all correct answers here. Harsh, Kev, Yani, very good. Yashi, Johanna, Sioni, Saisha, Jia, Yash, Darsh, Vansh. Oh, sorry, just check your answer once again. So you have got the value of x as 3 and y as 1. So आपको x मिलेगा 3, y मिलेगा 1. So your two-digit number will be 31. Okay. Next one. Question number 15.
two-digit number is such that the tens digit exceeds twice the units digit by 2. The tens digit, see the words, the tens digit exceeds twice the units digit by 2. This is the words. These are the words. Okay. तो टेंथ डिजिट सबसे पहले, तो टेंथ डिजिट क्या होता है? टेंथ डिजिट इज x. ठीक है. एक्सीड्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ पुट अ माइनस साइन. ओके, बिकॉज ये बड़ा है, जो यहाँ पे आएगा वो छोटा है. सो टेंथ डिजिट एक्सीड्स ट्वाइस द यूनिट्स डिजिट. ट्वाइस द यूनिट्स डिजिट मीन्स 2y. Okay, by 2. By 2 means equals 2. Okay, tens digit exceeds twice the units digit by 2. This is my first equation. Second equation. The number obtained by interchanging the digits. Interchanging the digits मतलब क्या number हो जाएगा? 10y plus x. Okay, the number obtained by interchanging the digits is, this number is 5 more than 3 times the sum of the digits. ठीक है, क्या बोला है? 5 more than 3 times the sum of the digits. ठीक है, 3 times sum of the digits मतलब x plus y. ठीक है, और इससे भी 5 ज्यादा, 5 more than 3 times the sum of the digits. इससे भी 5 ज्यादा मतलब इसमें 5 ऐड कर दो. Okay, so the number is 5 more than, so plus 5, 3 times the sum of the digits means 3 bracket x plus y. Simplify this. It is very simple here. You know what will we equate? You will equate x. So you multiply this equation by 2 and this by 1. Okay. So 2x minus 4y equals 4. Second equation is minus 2x plus 7y equals 5. Signs are different, so you just need to add. Tell me the values of x and y. Correct, Sia. Darsh. Manya, correct. Others also, come on, fast. Correct, Yani. Correct, Aram. Yashi, Rajveer, correct. No, Swayam, check your x value. Check x again. Rajveer, check x again. Jahan, correct. Iya, Manya, correct. So you will get x as 8 and y as 3. So your number will be, your two-digit number will be, x will come first. Your number will be 83. Two-digit number will be 83.
So let's start with the next sum. Question number 16. 4 times a certain two-digit number, 4 times a certain two-digit number is 7 times the number obtained on interchanging the digits. ठीक है, तो 4 times a number is equal to 7 times the number obtained by interchanging the digits. Okay, this is the statement they are saying. Okay, so can anyone tell me what will be the equation? Who will try? Four times a number is equal to 7 times the number obtained by interchanging the digits. So it will be 4 into 10x plus y is equal 4 to into 10x plus y, correct. 4 times the number, okay. 7 equals into 10y plus x. 10y plus x, very good. Okay, so all of you understood? I hope all of you have understood. See, keep yourself participative. Try to answer. Even if it is wrong, doesn't matter. We are here to learn. 40x plus 4y equals 70y plus 7x. Okay. Janam, it is said na 7 times the number obtained by interchanging the digits. So interchanging the digits के बाद कौन सा number मिलता है? ये number मिलता है. So this is 33x plus 60, no, minus 66y equals 0. Now I can take 33 common here. That 33 will go get divided by 0. So 0 upon 33 क्या होता है? 0 ही होता है. So this is my first equation. If the difference between the digits is 4, difference between the digits is 4, matlab x minus y is 4. Simple. So now two equations are ready. Solve the equations. Yes, Heath. I'll be unmuting anyone, and if whoever is not responding, his name will be sent in the group as absent for today's class. Yeah, I can see answers. Very good. Dash, Suyani, Saisha, Sia, very good. Read.
Yes, correct. X, you will get the value of X as 8 and Y as 4. So your final number will be 84. So what if accidentally we write y first and x after that for and the number comes 48, then the whole sum will go wrong. No, no, no. Your values of X and Y are correct, but you will lose 1 mark in the end. Thank you, sir. Yeah. Question number 17. Sum of a two-digit number. किसका sum बोल रहे हैं? ध्यान से सुनो. Sum of a two-digit number. Sum of the digits नहीं बोला. Sum of a two-digit number and और किसका sum? Sum of the two-digit number with sum of the two-digit number and the number obtained by interchanging the digits. Number obtained by interchanging the digits. ठीक है? Is 121. Sum of a two-digit number and the number obtained by interchanging the digits is 121. So what will that number be? कैसे बनेगा equation? Yes, someone else try to answer now. Correct, Manya. Yes, whose hand is raised? Soon is Aisha. Okay. I'll try to give someone else this time. Pushkar. Pushkar. Yes, sir. Answer this question. Okay, sir. Two-digit number and the number obtained by interchanging the digits. What will be the equation come here? Sir, 1 minute, I am solving it. You say it to me. No need to solve. I'm just asking you the question. क्या पूछा है? Sum of a two-digit number. Two-digit number मतलब क्या लिखते हैं? Tens and hundreds, sir. What? Two-digit number, na? Two-digit number को कैसे represent करते हैं? एक भी सम सॉल्व किया आपने अभी तक? Ten x plus y plus 10y plus x equals 121. When I add them, I'll get 11x plus 11y equals 121. You can take 11 common here. So you will get x plus y as 121 upon 11. That is 11 only. So x plus y is 11. This will be your first equation. Okay. सर अगर कोई भी टू डिजिट सम विद इंटरचेंजिंग वाला ऐसा कोई भी सम आया तो हम लोग को 10x माइनस वाई प्लस 10y माइनस एक्स से लिखना है. प्लस प्लस बीच में प्लस है. 10x हाँ, plus वही y plus. and 10y plus Yeah. x. ये एक फॉर्मूला लिखा है. यस यस. अगर टू डिजिट नंबर बोला है तो टू डिजिट नंबर का मतलब यही होता है 10x plus y. और अगर इंटरचेंजिंग डिजिट्स बोला है तो इट इज 10y plus x. ओके, थैंक यू सर.
if the digits of the number differ by 3. Okay, if the digits of the number differ by 3, तो means दोनों digits का difference है 3. So x minus y is 3. That is my second equation. So your final answer, you will get x as 7 and y as 4. So your answer will be 74. Okay. Next. Question number 18. A two-digit number is obtained by, how is a two-digit number is obtained? Two-digit number means 10x plus 5. So how is it obtained? It is obtained by multiplying the sum of the digits by 8. Sum of the digits को 8 से multiply करो. Sum of the digits means x plus y. इसको 8 से multiply करो. How is a two-digit number obtained? By multiplying the sum of the digits with 8. This will be my first equation. Solve this. 10x plus y, 8x plus 8y, 10x plus y minus 8x minus 8y equals 0. So 2x minus 7y equals 0. This is my first equation. Second, also it is obtained by, मतलब ये same two digit number is also obtained by, मतलब ये two digit number के लिए एक और equation है. It is also obtained by multiplying the difference of the digits by 14. Multiplying the difference of the digits by 14 and adding 2. And adding 2. Multiplying the difference of the digits by 14 and adding 2. ठीक है, तो दो कंडीशन दी है. पहले तो टू डिजिट नंबर कैसे मिलता है, सम ऑफ द डिजिट्स को 8 से मल्टीप्लाई करो, और दूसरी बार टू डिजिट नंबर कैसे मिल रहा है, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स को 14 से मल्टीप्लाई करो एंड देन ऐड 2. ओके. This is the second equation I am getting. Now solve these two equations. Correct, Pari. Solve these two equations. Equate the variable x. Multiply the first equation by 2 and second equation by 1.
Yes, what is the answer you are getting for x and y? Hurry up, hurry up. I can see different answers coming. कोई कुछ और कह रहा है. Someone is saying it's 2, someone is saying -2, 7, 14, 4. बहुत सारे variations में answer आ रहे हैं. Most common answer I think is 7 and 2. Let me see it. When you multiply the first equation by 2, you will get 4x minus 14y equals 0. Second equation is minus 4x plus 15y equals 2. You will add the equations. 4x will get cancelled. 15y minus 14y is y. Y is equals to 2. I am getting y as 2. Then in the first equation, I'll put the value of y. So 2x minus 14 equals 0. So 2x equals 14, x is equals to 7. So the number is 72. Okay. Now we have completed this exercise 6E. We will do 2 sums from 6F also today, and then we will end the lecture. Okay, 2 sums from 6F. There is nothing new in 6F. It is the same exercise, same type of word problems, only the type is different. So which 2 sums we will be doing? See, the first 4 sums are regarding the age of the students. Age of the students. Okay. So those will be done next time. I'll do the question number 5 and question number 7. These 2 sums I'll do now because they are relatively easy. Okay. See. So exercise 6F, question number 5. The annual incomes of A and B are in the ratio 3:4. See what they have said. Incomes of A and B are in ratio 3:4. If something is given in the ratio, I can write like this. See, A की income और B की income का ratio है 3:4. The ratio of the income of A and B is 3:4. The ratio of the income of A and B is 3:4. So I can write that. Therefore, A's income is 3x, B's income is 4x. I can write like this. Ratio है ना, 3:4 उनका ratio है, तो I took 3x 4x. Correct. तो A की income है 3x और B की income है 4x. Okay. Then they are saying their annual expenditures are in the ratio 5:7. Okay. So expenditure, you understand ना, expenditure मतलब जो खर्चा है उनका. So expenditures of A and B are in ratio, what is the ratio? 5:7. ठीक है. तो expenditure के लिए we'll have to take a different variable. Okay. तो मुझे बताओ what will be the expenditure of A? A's expenditure, B's expenditure. A's expenditure will be 5y and B's expenditure will be 7y.
Very good. Yes, yes, very good. I can see answers coming in the chat box. ठीक है. A is expenditure, B is expenditure. ठीक है. Okay. If each saves 5,000, now tell me, किसी की इनकम कुछ है और उसका एक्सपेंडिचर कुछ है, ठीक है, तो उसकी सेविंग्स क्या होगी? उसके इनकम में से इफ आई सबट्रैक्ट द एक्सपेंडिचर आई विल गेट द सेविंग्स. करेक्ट. इफ आई एम अर्निंग 10,000, ठीक है, इसमें से मैं 5,000 खर्चा कर देता हूँ, तो मेरी सेविंग क्या हुई? 5,000. करेक्ट. सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग. Agree all of you? Okay, so I will write here that income minus expenditure is savings. Okay, so for A, tell me, for A की इनकम क्या है? 3x. A का एक्सपेंडिचर क्या है? 5y is equal to 5,000. दोनों 5,000 सेव करते हैं, ठीक है. फॉर B का इनकम क्या है? यू कैन सी हियर इनकम ऑफ B 4x. ओके, और B का एक्सपेंडिचर क्या है? 7y. सो 4x minus 7y will be again equal to 5,000 only. So these are my two equations. समझ रहा है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. ओके, now I think it is easy to equate the first variable, that is x. Solve it, equate the variable x. The LCM will be 12. Equate the variable x and tell me the answer for x and y. What are the values of x and y you are getting? You will get the value of x as 10,000 and y as 5,000. Okay, these will be the values of x and y. But in the end, they are saying find their annual incomes. So A की income क्या होगी? A income is 3x. That is 3 into 10,000. That is 30,000. And B की income ही पूछा है सिर्फ. B की income is 4x. That is 4 into 10,000. That is 40,000. This is my final answer.
Okay, let's do the next sum. Question number 7. 5 and 7. Two questions we'll do today. 7. It's an interesting question. Now see. A and B both have pencils. Okay. So what we will say, let A has X pencils and B has Y pencils. Okay. A के पास X pencils है और B के पास Y pencils है. ठीक है. Number of pencils which they have is X and Y. If A gives 10 pencils to B, देखो A के पास X है, B के पास Y है, ठीक है. A ने B को 10 पेंसिल्स दे दी, मतलब A के पेंसिल्स में से 10 कम हो गई और B के पास 10 बढ़ गई. Am I right? A ने B को पेंसिल्स दी, इसका मतलब A के पास जितनी भी पेंसिल्स थी उसमें से 10 कम हो गई और B के पास जितनी थी उसमें 10 बढ़ गई. ठीक है. So what happens after that? If A gives 10 pencils to B, then B will have twice as many pencils as A. So see, देखो ये A है और ये B है. क्या बोला है? जब A ने B को 10 पेंसिल्स दे दी तो हुआ क्या? B will have twice as many pencils as A. मतलब A का डबल है B के पास, तो A के वैल्यू को डबल करना पड़ेगा. समझ रहा है? B will have, क्या बोला है क्वेश्चन में? B will have twice as many as A. As many as A. तो B is equals to twice A, इसलिए मैंने A को 2 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है. So if I solve this, I will get the first equation. First equation. Second statement. Now they are saying if B gives 10 pencils to A, मतलब A के पास X है, B के पास Y है. If B gives 10 pencils to A, तो अभी A के पास 10 बढ़ जाएगी और B के पास 10 कम हो जाएगी. करेक्ट. They will have same number of pencils, मतलब दोनों इक्वल होंगे. X plus 10 will be equal to Y plus Y minus 10. करेक्ट. तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? This will be my second.
Yes, solved all of you. You will have to subtract. If you subtract, the signs will change. You will get x as 50. X 50 mila. Put in equation 1. Y equals 70. Okay, so the remaining sums we will do it in the next class. That's it for today.